I'd like to request Professor Gurjaspreet Singh to share a few words about Dr. Dharamveer. So, good afternoon. Professor Dharamveer is an accomplished associate professor in the Department of ENT at PGI, Chandigarh. With a strong academic background and years of clinical and surgical expertise, Professor Dharamveer has made significant contribution to the field of ENT, particularly in the area of head and neck surgery, endoscopy, sinus surgery, and oncology. He is known for his commitment to patient care, innovative surgical techniques, and academic mentorship. Professor Dharamveer has been actively involved in teaching and postgraduate students and has participated in a number of national and international conferences, workshops, and academic forums. His research interests span a wide spectrum of ENT methods, and he has published extensively in reputed peer-reviewed journals. A respected figure in the medical community, Professor Dharamveer continue to play a pivotal role in advancing both clinical practice and research in ENT and PGI. Now I invite Professor Dharamveer for delivering lecture. Thank you, sir. So today we are going to talk about the evaluation of middle ear disease. How many of you are aware of ear? Can you raise your hand? कभी सुना है कान के बारे में? किस किसने सुना है? कितने पार्ट्स हैं कान के? 3. सबसे मेन रोल किसका है? मिडल ईयर का. मिडल ईयर इज बेसिकली ए ब्रिज, अदरवाइज मेन इज इनर ईयर. कौन सी नर्व सप्लाई होती है कान से जो सुनते हैं हम लोग? विच नर्व सप्लाई टू द ब्रेन? एनीवन? वेरी गुड. इसके लिए क्लैपिंग. Because this is the main thing through which we are just hearing. We are going to talk about here main few points: physiology and anatomy of the middle ear, identify different external and middle ear pathologies, recognize symptoms and signs of disease. चल रहा है इस वक्त? Is it working? लेजर इसी से करना पड़ेगा. अच्छा चलो. What are the main functional and anatomy and physiology of the middle ear? Middle ear basically connects external ear to the inner ear. This is a bridge between both external and inner ear. Main function of that is a sound transmission by ossicles. These are the ossicles. When the sound waves activate, it strikes to this tympanic membrane. If you just see this, हम tympanic membrane को और क्या बोलते हैं पंजाबी और हिंदी में? पर्दा. पर्दा. Okay. So it strikes on this. As this push inside, then there is a small teeny bones. We जितनी हमारी body में bones है ना, total, out of that these are the main 3 teeny bone we call it. That is we call it the ossicles. So first it moves towards the ossicle of that malleus. This is the malleus. Then it strikes like a hammer. Okay. Then it moves towards the incus. Then third one is the stapes. So stapes work like a piston. When this sound waves strike tympanic membrane, it moves these ossicles and
this step is go inside and it pushes this oval window which is having a what? Anyone? There is a fluid, perilymph and anolymph fluid are there. These are two watery fluid inside this cochlea. So cochlea के अंदर ये it moves. Then there is a one, it has a basilar membrane. Then basilar membrane moves up and down, and there are hair cells which strike stereocilia, and it moves, and that auditory nerve then start to movement. Then that fibers strike and we are able to hear in our brain through that auditory nerve. And one is there which is a pressure equalization, which is a main eustachian tube, which equalize. Many times you may have seen that when you are flying, आप फ्लाइट में जाते हो एरोप्लेन में, then आपके कान में कुछ पेन होनी शुरू होती है. इज इट? कभी महसूस करा किसी ने? Why? That is due to the pressure changes. वो प्रेशर चेंज को इक्वलाइज करने के लिए क्या है? ये यूस्टेचियन ट्यूब. It always basically closes, but when it's we are swallowing, then at that time only it's open and it equalizes middle ear and external ear pressure. Then you have seen third function is that protection by acoustic reflex. Protection by acoustic reflex means you have seen many times when there is a Diwali or some gunshot, you are just trying to close your eyes. Okay, ororeflexes we call it that. But there are in tympanic membrane stapedius muscles which contracts. When the extra sound is there, they just try to control that it should not be ruptured. You should not get the sudden hearing loss. Many times the sudden hearing loss due to this trauma. To prevent that, it helps us. What are the main or most common causes, diseases of the external ear? You can see here, this is a wax. Wax के बारे में तो पता होगा हर एक को. Debris, जो कान में मैल कह देते हैं हम लोग. उसके कारण we get the problem. और external auditory injury, ये canal है, external auditory canal. What happened to this? Many people are using the words, Johnson words, you know that. So when we are using that, this wax go inside or it hurt your skin from the canal. So that's why also you get injury. You can get edema or trauma with that. Then third one is a congenital ear anomalies. Have you seen any time any child or adult who is not having the pinna? किसी ने देखा आज तक? हमारे पीजे में so many patients are coming nowadays who are having not, ये एक्सटर्नल ईयर है ही नहीं उनका, उसको अनोशिया बोलते हैं. अगर फिर ईयर लोब उनके अलग तरह के बैट ईयर के कान, एंड देन यू कैन कान का बाहर का पार्ट है बट कैनाल इज नॉट देयर. अनोशिया में एब्सेंट ऑफ कैनाल, इसमें माइक्रोशिया में स्मॉल this type of pinna is there but canal is also there. Okay, then cap ear, cryptosia, and ये आपने लास्ट में. then there is a bacterial infection. किस में होती है ज़्यादा? जब हम स्विमिंग करते हैं. when we are doing the swimming, then you get that fungal. उसको ऑटोमाइकोसिस बोल देते हैं. ऑटो मीन्स ईयर, माइकोसिस इज infection. So this, and
maximum problem it gets by the children, swimmers, due to this fungal infection. So we should always swim when we are swimming. We should swim with the earplugs, not without earplugs. Then disease of tympanic membrane. That you can see here the result of negative intratympanic pressure when the eustachian tube is blocked. So इस तरह से उसमें बल्ब इस तरह की प्रॉब्लम्स वो जैसे होता है ना दैट हमारे कोई फिंसी हो जाती है उस तरह से वो बन जाता है जैसा ब्लोसा. और ईयर पेन इज लाइक ए पेन ऑफ डेंटल. कभी किसी को इफ एनीबडी गेट दैट dental pain, you know that is very severe pain. The same pain you get if you get ear infection. And this basically is only due to some, if you have a cold and cough. Whenever you are having the cold and cough, your adenoids and tonsillitis are there, then you get this type of a problem because of this eustachian tube last which I have shown you, that if that is not working, it's not effective, temperature or is not pressure is not able to maintain, equalize, and the fluid accumulate in the middle ear. Your middle ear is a main cavity in which this pus type fluid is become due to some infection. Then tympanic membrane can rupture. अब कान में जो खासकर लेडीज उन्होंने वो लगाई होती है ना हेयर पेन, दे ट्राई टू कि कान में थोड़ी थोड़ी खारिश होती है तो देन दे गेट द इरिटेशन. एंड इरिटेशन के खारिश तो एक ऐसी चीज़ है यू नो दैट कि थोड़ी सी होती है फिर थोड़ी और होती देन इमीडिएटली इट रप्चर योर tympanic membrane, पर्दा. Then if somebody is not having hair pain, then they just try to mastic ले लेते हैं. जॉनसन बर्ड का तो मैंने पहले I have already told you. Then again mostly ruptured by in at bus stand के बाहर many times you have seen that the people are sitting, वो कान में ऐसे टांगा हुआ उन्होंने और वो उसका क्लीन करते हैं. हर बंदा जाके पढ़े लिखे लोग भी you have seen that they are getting clean from them, then they also rupture because they don't know the exact measurement of this external auditory canal. Other causes include sudden change in the ear pressure as I have told, और स्कूल में बच्चों को ज़्यादातर जब टीचर थप्पड़ मार देते हैं, बहुत सारे पेशेंट बच्चे हमारे पास आते हैं मैनी टाइम कि उनके कान में टीचर ने थप्पड़ मारा या फादर ने थप्पड़ मारा, मम्मी तो नहीं मारती. So then that is also again get the trauma. Then sudden blast near the ear. अगर आपने देखा दिवाली में मैनी टाइम वी आर जस्ट पटाखे बजाने का बड़ा शौक है यंग जनरेशन को, बट उसके कारण वी हैव डन द सर्वे इन वन दिवाली 2-3 years back. I know many times every Diwali before one day in the newspaper they publish burn injuries in the firecrackers or the eyes, basically eye trauma, but nobody is talking about that ear trauma. But we have just done this study and we got around 12 patients who got the hearing loss, hearing trauma in the Diwali. Then forceful valsalva. हम basic when your pressure is not able to maintain in the ear, so we just advise this. You have to close your nose and mouth and try to push your ear through the ears. आप कान में से निकालने की कोशिश करो, then you will see that your tympanic membrane comes out. So if you are just you are having the cold and you try to push it more, then also the traumatic rupture of the tympanic membrane.
देन प्रेशर बाय फ्लूइड, एज आई हैव टोल्ड, अगर प्रेशर ज़्यादा बन गया कान के अंदर, म्यूकस बन गया, पस ज़्यादा हो गई, तो देन अपने आप ही वो पर्दे को रप्चर कर देगा। डाइविंग, उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। वाटर स्पोर्ट कई लोग करते हैं उसमें, देन फोर्सफुल स्ट्रेंगिंग एंड फ्रैक्चर ऑफ द टेम्पोरल बोन। Even in the whenever somebody gets a head injury on a roadside trauma, उसके कारण भी the bleeding is coming, कहते हैं ना, नाक से ब्लड आएगा या कान से आएगा, that is due to that also trauma. Then perforation of tympanic membrane associated with long standing infections, अगर 3 महीने से ज़्यादा किसी के कान में कोल्ड का, 15 दिन से ज़्यादा, नॉट 3 महीने से, 15 दिन से ज़्यादा, इफ़ यू गेट दैट इन्फेक्शन इन योर ईयर, देन वो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाएगी, उसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाता है। इमीडिएट रेफरल टू हायर सेंटर शुड बी डन इन सच केसेस, बिकॉज if your tympanic membrane rupture, you just get the hearing loss also. Then the classifications of middle ear disease. These are the classification done by them. Infectious may be, non-infectious, congenital, traumatic. In infectious otitis media we call it, that acute or chronic. Acute means 3-4 दिन और 15 दिन से पहले पहले हुआ, अगर 15 दिन के 3 महीने के बाद हुआ तो क्रॉनिक हो जाएगा। देन दिस इज द मैस्टॉइड, इट गोज द इन्फेक्शन टूवर्ड्स दैट। अगर मैस्टॉइड में इन्फेक्शन चली गई तो देन इट कैन गो टू द ब्रेन आल्सो, इट्स अ वेरी सीरियस। सो इफ एनीबडी इज गेटिंग दैट pus regularly from the ear, you should get checkup. Non-infectious are those barotrauma, cleistotrauma and ossicular fixation. In ossicular fixation is mostly happen to ladies, maximum in the females, and it is able to confirm at the age when you have around 30 to 35 years, or when the pregnancy is there, then the people come to know that is there any ossicular fixation is there or not. As I have told you that a stapes जो पिस्टन वाला काम करती है उसको कहते हैं, वो स्टेपिस फिक्स हो जाती है ओवल विंडो के ऊपर, तो देन इट्स नॉट मूविंग, सो दैट्स व्हाई द पेशेंट गेट दैट hearing loss. Congenital, already told, atresia and ossicular anomalies, and traumatic, tympanic membrane perforation, temporal bone fracture. So these are the pictures through which we can see normal कब होता है, AOM, OME and COM. Then serous otitis media symptoms and signs: reduced hearing, tinnitus, एयर बबल्स बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इस तरह से एयर बबल्स हो। टिनाइटस का पता आप लोगों को? टिनाइटस क्या होता है? क्या होता है? जो रात को सोने के टाइम कई बार आपने देखा होगा ना, जो एनवायरनमेंट में क्वाइट नॉइजेस पे द पीपल गेट द रिंगिंग टोन, आइदर मैनी पीपल गेट दैट पानी जैसे टप टप करता है उसकी आवाज़ आती है, या घंटियाँ बजती हैं, कहते हैं ना पेशेंट, कई बार कभी सुना होगा आपने, उसको टिनाइटस बोलते हैं। और टिनाइटस इज़ रियली 70 to 80% पीपल आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। इतने पेशेंट आते हैं हमारे पास, मतलब दे आर रियली अनबियरेबल एबल टू हियर दोज टोन्स रेगुलरली, रात को नींद नहीं आती। एक बार मेरे पास पेशेंट आया, शी वॉज अराउंड 53 ईयर ओल्ड, मैंने अपने सर से बात करी, उसको प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस, शी वॉज हैविंग नो हेयरिंग इन बोथ ईयर, बट फिर भी उसको ये टिनाइटस की प्रॉब्लम। तो वी आर नॉट एबल टू डायग्नोज हर कि व्हाट इज द मेन रीज़न
कि एक बंदे को सुनाई तो देता नहीं, लेकिन फिर टिनाइटस क्यों सुन रहा है? उसको अनडायग्नोस छोड़ना पड़ा, बहुत सारी उसको मेडिसिन दी, सेक्रेटरी वालों ने भी दे दी, न्यूरोलॉजी वालों ने भी दे दी, लेकिन शी वॉज नॉट एबल टू गेट दैट. बट सेडेटिव देते थे फिर सेक्रेटरी वाले, उससे थोड़ा सा उसको आराम मिल जाता. बट सेक्रेटरी की ट्रीटमेंट, यू नो दैट इफ़ यू हैव स्टार्टेड एनी सेक्रेटरी ट्रीटमेंट देन यू हैव अनदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम. सो इट्स ऑलवेज बेटर. बाबा रामदेव जी, योगा विच द बेस्ट ट्रीटमेंट नाउ डेज, हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके लिए. तो यू कैन गेट क्योर विद द बॉल्सवा एंड प्राणायाम. ओके, so try to improve with those things is the better treatment. Don't go to the doctors अगर इस तरह से नहीं ठीक होता तो. Then acute otitis media with sudden onset viral infection. Many time आपने सुना होगा, कभी सुना आपने कि रात को पेशेंट सोया हुआ है, सुबह कहता है यार मेरे को तो इस कान से सुनता ही नहीं. So that may be the viral infection. फीवर, ओटैल्जिया, कान में पेन हुई, हेडेक हुई, उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो जाता है. ऑटोस्कोपी, रेड बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई देती है उसमें इस तरह से. देन इन चीज़ों का व्हाट्स द मेन ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक्स ओनली. एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स, पेन रिलीवर, एंड आल्सो एंटी इन्फ्लामेटरी आर देयर through which you can get them. So ETD, eustachian tube dysfunction, key role in the middle ear. ये देखो यहाँ से जाके ये यहाँ, ये प्रेशर जो हमारा मेंटेन करती है, ये यूस्टेचियन ट्यूब है. और दिस वेंटिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एडिनोइड्स टॉन्सिलाइटिस की वजह से. ये ब्लॉक हो जाती, बहुत छोटी है ये भी, इसीलिए जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती देन इट क्लोजेस. द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू मेक अ इक्वल प्रेशर. ड्यू टू दैट प्रेशर दे गेट द प्रॉब्लम. मेन कॉजेज एलर्जी, जैसे मैंने बोला पहले, कोल्ड कफ हो गया, इन्फेक्शन हो गई. देन एडिनोइड्स और टॉन्सिलाइटिस, वो स्वेलिंग हो गई टॉन्सिल्स में, एडिनोइड्स में. देन हाइपरट्रॉफी लीड्स टू नेगेटिव प्रेशर, फ्लूइड एक्युमुलेशन, मिडल ईयर में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है. ओके, देन again इसकी evaluation through Valsva. Tympanometry is basically the impedance odometer which make that bridges the, okay, so उसकी measurement के through और endoscopy के through we can check that. Then clinical examination of the ear, inspection, how we do that. आपने देखा होगा कान में डॉक्टर, एक बार एक मेरे फ्रेंड थे, वो जज थे अपने पंजाब हाई एंड हरियाणा हाई कोर्ट के. तो वो मेरे पास ले आए कि इनकी एवेल्युएशन करनी है, टेस्ट करना है. तो जब मैंने उनका टेस्ट करा तो मेरे से ज़रा थोड़ा वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए, बिकॉज आई हैव स्पेंड मोर टाइम दैन दैट ENT डॉक्टर जो मेन करता है. मेरे को कहने लगे यार मुझे तो ये डॉक्टर जो ENT वाला मेन है, मुझे ये डॉक्टर नहीं लगता. मैंने कहा क्या हुआ सर? कहते यार उसके पास स्टेथोस्कोप नहीं. अब जस्ट इमेजिन दैट अवेयरनेस. एक जज होके उसको इतना नहीं पता कि एक ENT वाले के पास क्या चीज़ होनी चाहिए और एक मेन डॉक्टर है जो MBBS वाला, उसके पास क्या होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कैन यू टेल मी? ENT वाले के पास सिर्फ ये हेड मिरर होता है और ये ऑटोस्कोप होता है. आपको इससे पता चलता है. अब डेंटल वाले को थोड़ी आप मेडिसिन वाला डॉक्टर कह दोगे. आप डेंटल वाले को कहेंगे कि हाँ उसके पास स्टेथोस्कोप है. वो भी सिर्फ एक दिखावे के लिए लगा लेते हैं, लेकिन अब दांत का तो पल्स नहीं देखना स्टेथोस्कोप से. सो दैट्स द थिंग कि हमारी अवेयरनेस, व्हाट वी हैव, हमने इतनी किताबें पढ़ ली, इतने जज बन गए, इस लेवल पे आ गए. इफ़ यू डोंट हैव दैट नॉलेज देन कैन यू टेल हमारी एजुकेशन कहाँ है, वेयर वी आर स्टैंडिंग. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वी शुड एबल टू नो दैट.
देन पैल्पेशन, ये जो एरिया पेरियार्कुलर इस साइड पे, और ट्रैगस, इसमें टेंडरनेस, इसमें पेन हो जाती है। अगर आप प्रेस करते हो ट्रैगस को, ये जो पार्ट है इसको आप प्रेस करोगे तो पेन होगी आपको। देन मैस्ट्रॉइड टेंडरनेस, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि कान के अगर आप पीछे भी ऐसे हाथ लगा के देखोगे तो आपको पेन होगी इफ़ यू हैव ए इन्फेक्शन इन दैट, और सॉफ्ट हो जाएगा वो। देन ऑटोस्कोपी, थ्रू ऑटोस्कोपी वी जस्ट सी दैट दिस न्यूमेटिक ऑटोस्कोपी मोबाइलिटी, कि जब वो हम ऐसे नाक बंद करके और वो करते हैं तो ये जो ऑटोस्कोप के साथ में वो जो पर्दा है इट मूव्स, तो हमें पता चल जाता है कि TM इज ओके और नॉट। So main, now what type of hearing loss you get if you have these type of infections? So in hearing loss we have three types of hearing loss. One, तो जो whatever he has told about the auditory nerve, जैसे हमारी अगर ऑप्टिक नर्व वीक हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐनक लगानी पड़ती है। तो अगर ऑडिटरी नर्व वीक हो गई उसको SN लॉस बोलते हैं हम लोग, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, उसके लिए हमें हेयरिंग एड लगानी पड़ती है। उसका यही ट्रीटमेंट है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट इफ इट्स ए 100% profound loss, now the new research is there, like a heart transplant, the same we have a cochlear implant nowadays. अभी जितने भी बच्चे नए भी पैदा होते हैं उनके लिए cochlear implant is available. अगर आपको profound loss 100% deaf mute है बच्चा, तो you can go ahead with the this treatment. And this facility, government have so many schemes. If you are poor, from the background of poor, they have some PM fund or social welfare schemes through which they try to help. Otherwise, the cost is around 6.5 lakh minimum. So हर patient नहीं afford कर पाता. But if you are working in a government institute, then you can get that benefit from the reimbursement. But it doesn't cover in the Ayushman जो स्कीम चल रही है. Why? Anybody can tell me? आप लोग young हो, you should know that. Why they have not included in Ayushman? Anyone? स्कीम्स का पता है आपको लोगों को? वैसे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिससे पुअर पेशेंट्स को और लोगों को हेल्प मिलती है, डू यू हैव एनी आइडिया? You should have, because if you are studying in this type of a university, आपके गांव में, आपके घर के आसपास जो कोई बच्चा या बुजुर्ग या किसी को भी कोई प्रॉब्लम इस तरह की हेयरिंग लॉस की है, फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द हेल्प, यू शुड ट्राई टू हेल्प दैम. इफ यू हैव अवेयरनेस देन ओनली यू कैन guide them. This is only because its a cost is they have put the 5 lakh in Ayushman minimum limit, जो maximum limit है 5 lakh. So 5 lakh से cost तो 6.5 लाख की है इसकी. How they can cover that? That's why they have not included in that Ayushman scheme. But heart वाला तो पता है ना, heart वाली हो जाती है. जो heart के अभी जो बच्चे जिनका होल होता है कंजेनिटली एबनॉर्मेलिटीज़, उसमें ये भी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है. जो हेयरिंग लॉस की मैंने बताई आपको, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस जो है वो कंजेनिटल है, नॉट ट्रॉमेटिक, नॉट दैट. ट्रॉमेटिक में प्रोफाउंड लॉस बहुत कम आता है, बट कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी, जो एबनॉर्मेलिटी कान नहीं बनना जो मैंने बताया, उनमें ये सारा. और उसमें जिसका कान नहीं बना हुआ उसमें इम्प्लांट जो होता है वो 6.8 लाख का है, 80,000 का. उसको बाहा बोलते हैं, बोन एंकर्ड इम्प्लांट होता है वो. सो फॉर प्रोफाउंड लॉस, दिस सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, इस तरह से लॉस आ जाता है. और जब मिडल ईयर में प्रॉब्लम होती है देन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है इस तरह से, दिस टाइप. एंड व्हेन द कॉम्बो, हम जाते हैं ना थिएटर में, कॉम्बो की बड़ी आदत है हमें, पॉपकॉर्न मिलेंगे साथ में और कोल्ड ड्रिंक मिलेगी. सो देन वी कॉल इट द मिक्स हेयरिंग लॉस, दैट इज एसएन एंड कंडक्टिव कंपोनेंट बोथ आर हैविंग द प्रॉब्लम. उसकी नर्व में प्रॉब्लम आ जाती है और मिडल ईयर में प्रॉब्लम आ जाती है. तो दैट्स व्हाई दे गेट द मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, कॉम्बो हेयरिंग लॉस. सो हाउ यू जस्ट इवेल्युएट विद दिस द इम्पीडेंस ऑड. ये जो सेटअप है, दिस अ 2 रूम सेटअप, एनाक्वाइक
इसको बोलते हैं हम लोग हेयरिंग टेस्ट साउंड ट्रीटेड रूम, वी कॉल इट दिस साउंड ट्रीटेड रूम। जब भी हम चेक